Hello student, this is Manisha Thamar on my YouTube channel Chemistry for All Exams. My dear student, this is my second lecture of the thermodynamics chapter, chapter number 6 of class 11th. And in this chapter, my dear students, I will explain first law of thermodynamics. According to first law of thermodynamics, which is related to the conservation of energy. According to this law, energy can neither be created nor be destroyed, although it may be converted from one form to another form in any process. Means इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि ये कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी है, जिसमें फर्स्ट लॉ कहता है कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते, ओनली हम इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. दैट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कॉन्स्टेंट. किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट होती है. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लॉ एंड मैथमेटिकली फॉर्म इट इज़ डेल यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, वेयर क्यू इज़ द एनर्जी ऑब्जर्व बाय द सिस्टम and W is equal to work done by the system. Here energy is the change in energy. Some important results regarding to first law of thermodynamics. For isothermal irreversible expansion. Isothermal means where temperature is constant at the whole process. Irreversible means the reaction which cannot be or process cannot be reversed. Q is equal to minus W होता है, means work done is in negative value, and P exerted V2 minus V1. For an isothermal reversible expansion or compression from the volume V1 to V2, then we find the heat यानी energy change या heat जो होता है that is Q is equal to work minus negative work done, which is equal to the nRT, which is related to gas constant natural log V2 upon V1. For isothermal expansion of an ideal gas against vacuum, if we are talking about vacuum, that will be the free expansion. du is equal to 0, w भी 0 होगा और q भी, means there is no energy change, there is no work done, there is no internal energy. Since internal energy of an ideal gas is a function of temperature for all isothermal processes involving ideal gas, del u is equal to 0 whether the process is reversible, याद रखें बच्चों, and irreversible. For adiabatic changes q is equal to 0. Adiabatic changes there is no system, वो system होता है there is no change of heat and matter takes place during any between system and surroundings. Therefore del u is equal to w. For isochoric process, isochoric means where volume is constant throughout the process, that called isochoric process, where work done is equal to 0, then delta U is equal to QV plus 0, that means heat given to the system at constant volume change in constant volume change in energy. Now we are talking about enthalpy, H, that which is denoted by as the total heat content of a system constant pressure is known as its enthalpy. जितना भी टोटल हीट कंटेंट किसी भी सिस्टम का कांस्टेंट प्रेशर पर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है माइनस पी इंटू डेल वी, यानी कि प्रेशर मल्टीप्लिकेशन बाई चेंज इन वॉल्यूम. अब हम यहाँ पे Q की वैल्यू निकालें तो Q की वैल्यू क्या होगी, Q इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, मीन्स वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ W इन द फर्स्ट इक्वेशन in this equation. So next one is the at constant volume where delta V is equal to 0, then QV is equal to delta U. At constant pressure we have QP equals to delta U plus PW. तो यहाँ पे आप ये लास्ट रिलेशन आप कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V आपको मिल जाएगा.